एकदम से इतनी पिटाई, सेलिंग एबनॉर्मल लग रही है थोड़ी। हाँ, एबनॉर्मल। ये तो देखो, हम कल मिले थे, हमने आप आपस में बात कर ही रहे थे कि किसी भी दिन ये होगा, और ये आज ही हो गया। और ये एक्सपेक्टेड था, जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रही थी। तो जिस हिसाब से ये मार्केट में इरेशनल प्राइसेस हो गए थे, जिसका वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं था। तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं, आज आपने देखा होगा इनके इंडेक्सेस सबसे ज्यादा बीटन अप हुए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था सर। और ये अभी थोड़ा सा और लंबा चल सकता है। जो जो हम बात कर रहे थे कि दिवाली से पहले एक करेक्शन आएगी, और फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनेगी मार्केट में। जो ओवर प्राइस तो चीजें हो ही गई हैं सर। तो उसको लेके मेरे को लगता है कि ये वेरी मच एंटिसिपेटेड था। अब कोई नहीं देख रहा इसको तो नहीं समझ रहा आज उसको, उसके लिए एक सरप्राइज है तो ऐसा नहीं है। सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट सर, चर्चा को लेंगे एक बार जितेन सर और सचिन सर से, फिर कंफर्म करते हैं। सर अभी सब विजिबल हैं या अभी भी पार्टिसिपेंट्स आप नहीं देख पा रहे? Yeah, I can see now. Yeah. या नमस्कार जितेन सर। नमस्कार, नमस्कार। जी सो जी। जितेन सर, जैसा कि काफी टाइम से वी वर डिस्कसिंग कि ओवर हीटेड मार्केट है और स्मॉल और मिड कैप में ग्रोथ है, तो वेरी लाइकली करेक्शन है, बट उसमें कुछ आपको एबनॉर्मेलिटी सेलिंग में या कुछ मैक्रो चेंजेस की वजह से आपको चेंजेस लग रहे हैं? आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं सर, आज की मार्केट पोजीशन? नहीं, आई थिंक ये करेक्शन तो ड्यू था। और वन डे को हम लोग करेक्शन भी बोल नहीं सकते हैं। बट जनरली ऐसी मार्केट्स में ऐसे फास्ट करेक्शन ही आते हैं। सो अगेन, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन डे आफ्टर टुमारो। लकीली द मार्केट्स आर क्लोज टुमारो, सो ऑल कैन रिलैक्स अ बिट। बट आई थिंक फ्रॉथ निकलना चाहिए थोड़ा मार्केट से, जरूरी भी था। एंड करेक्शन थोड़ा और चलेगा तो वो हेल्दियर रहेगा, इज व्हाट आई थिंक। दो इट माइट नॉट बी अ पॉपुलर व्यू, बट आई थिंक करेक्शन वाज ड्यू एंड करेक्शन शुड हैपन फॉर वैल्यू टू इमर्ज। हमारी पहले भी बात हुई थी प्रिंस, आई थिंक इन सम अदर spaces also, that we were extremely uncomfortable with the current froth in the market. और अभी भी एक दिन के करेक्शन से हम लोग कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मुझे लगता है करेक्शन थोड़ा सस्टेन होगा तो अच्छा ही है। इसमें अभी नाउ देयर आर टू थिंग्स। वन, हु हैज कैश कैन स्लोली डिप्लॉय। जिसके पास कैश नहीं है उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करे। लीस्ट कन्विक्शन वाले नाम जो है, उनको आप निकाले और हायर कन्विक्शन में मूव, ये रीबैलेंसिंग रिकैलिब्रेशन जो बोलते हैं वो करना चाहिए जिनके पास कैश नहीं है। दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी यूज टू गेट इनटू योर कन्विक्शन स्टोरीज एंड नेम्स। सर सबसे ज्यादा मेरे ओपिनियन में प्रॉब्लम उनको आ रही है कि जिनका कोई प्लान ही नहीं है। बेसिकली उनको जब तक मार्केट चल रही है वो पैसे लगाते रहते हैं, और एक छोटी सी करेक्शन या थोड़ा सा जर्क आ जाता है मार्केट में, तो उनको यही नहीं पता होता उनको सेल करना है, रुकना है, क्या करना है। तो उस सिचुएशन को कैसे डील करें सर? ये इसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगर आपके पास प्लान नहीं है और आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो देन the the sole blame should lie with you. You should always have plan in mind what you want to do. करेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है। प्लान के बिना इन्वेस्टिंग करना तो ठीक है ही नहीं मेरे हिसाब से। सो गॉड हेल्प देम, इज व्हाट आई कैन से। अरे सर जी, विपिन जी पूछिए। परमार सर, इसको थोड़ा सा अगर सिंपल भाषा में समझाएं, तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोग बोरोड कन्विक्शन के ऊपर काम करते हैं, मतलब उनके पास कोई प्लान तो होता नहीं। आपने कुछ बोला वो ले लिया, मैंने कुछ बोला ले लिया, प्रिंस भाई ने कुछ बोला ले लिया।
तो जो लोग दूसरों की बोरोड कन्विक्शन के ऊपर काम करते हैं, उसको उसको तो झटका कब लगेगा कब नहीं लगेगा उसको पता ही नहीं लगेगा। तो क्या हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हाँ, तो बोरोड कन्विक्शन पे काम तो करना नहीं चाहिए। काम करना चाहिए तो ऐसे लोगों के एडवाइस पे करना चाहिए जिनको आप फुल्ली ट्रस्ट करते हो, अ, जो आपको करेक्शंस में भी गाइड करेंगे, जो आपको अगर अगर किसी के कहने पे ले रहे हो तो लेते वक्त ही पूछना चाहिए था भाई इसमें क्या करेक्शन अगर आया तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी आपने भले आप आ, किसी के एडवाइस पे ले रहे हो, किसी के टिप पे ले रहे हो, आपके पास प्लान तो होना चाहिए। किसी ने बोल दिया और ले लिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं लेट्स से आपने कोई, किसी ने बोला आपने एक स्टॉक ले लिया 100 रुपए में, तो कहीं ना कहीं आप पूछिए कि भाई ये इसमें मैं अगर 80 हो गया तो मैं क्या करूं, प्रॉफिट का बुकिंग मेरा क्या होना चाहिए। तो ये प्लान तो आप जब एंटर होते हैं तभी आपके पास होना ही चाहिए। जो लोग फॉरवर्ड कन्विक्शन पे करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें फंडामेंटल तो पता नहीं है। अगर वो 80 हो गया तो वो पैनिक कर जाएगा। अ, तो या तो आप उस वक्त फिर से पूछिए जिनसे आपने एडवाइस लिए, या फिर आप एक प्लान रखिए कि भाई मैं 20% के करेक्शन पे निकल जाऊंगा, वॉट एवर इट माइट बी। किसी का 10% हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 30 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। बट एक मैं बोलता हूँ हमेशा, और एग्जिट प्लान भी रखिए। एग्जिट प्लान का गेन का जो है वो टारगेट आपका ऊपर होना चाहिए। आप 20%, 30% डाउन तक रुकोगे और आप 20% पे निकल जाओगे तो आप कभी पैसा नहीं बनाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। ऑलवेज योर प्रॉफिट percentage which you want to book should be higher than your stop loss percentage। ये अक्सर गलती करते हैं लोग। 50% नीचे गया मार्केट तो भी बैठे रहेंगे वो स्टॉक में, लेकिन कोई चीज 20-25% बढ़ गई तो उसको बेच देंगे। तो उस तरीके से इज ए श्योर शॉर्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर जो हम बोलते हैं। तो बस इसी तरह ये कीजिए। मेरा तो बोलना है बोरोड कन्विक्शन पे काम करना ही नहीं चाहिए। जी सर, थैंक यू। स्पीकर हैं पीयूष। पीयूष, आप अनम्यूट करके अपना सवाल रख सकते हैं। बस ये इंश्योर करें कि कोई बाय सेल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन ना हो आपका। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं या स्पीकर रिक्वेस्ट आपने ऐसे ही सेंड कर दी थी? एनीवे, जितेन सर, जो आप बात कर रहे थे ना उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ। इनिशियली मैंने भी स्ट्रगल करा है उस चीज से, और सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जैसे करेक्शन आई तब उसको आप सेल ना करके उसको वेट करते हैं, और जब वो उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे सिचुएशन अगर कंपनी अच्छी है तो बेटर हो रही है कि जहां पे आप ऐड भी कर सकते हो, और उस टाइम पे आदमी सेल करता है, तो ये बहुत मतलब एक तरीके से उल्टा ही रिएक्ट करते हैं। हाँ, तो ये मैं तो रेगुलरली लोगों को मिलते रहता हूँ, इन्वेस्टर्स को मिलते रहता हूँ। इन कॉमन ट्रेड विच आई ऑब्जर्व, जो मैंने किया है कि लॉस एवर्जन इतना ज्यादा अफ्लिक्ट करता है लोगों को। 9 out of 10 पीपल आई बिलीव मीट हैव दिस सिंड्रोम ऑफ लॉस एवर्जन। वो लॉस में निकलना यानी उनके लिए पता नहीं, ये सबकॉन्शियसली एक ईगो हर्ट होता है या वट एवर, लॉस में निकलना बिल्कुल बिहेवियरल एक ट्रेट है, वो लोगों को आता ही नहीं है। और आई थिंक लॉस में निकलना बिल्कुल एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आपके सभी बेट्स तो सही हो नहीं सकते हैं। तो आपने रियलाइज किया कि ये मिस्टेक हो गई है, तभी आपने लॉस बुक करने को आपको आना ही चाहिए। तभी आप सुपीरियर रिटर्न बना सकते हैं। सो यही बोल रहा हूँ मैं। आपके कुछ स्टॉक्स अभी बहुत सारे लोगों के लॉस में चले गए हो कि आपका कन्विक्शन अगर नहीं है, उसमें से निकलिए, लॉस बुक कीजिए और हायर कन्विक्शन नेम्स में जाइए जहां आपको कन्विक्शन है, जहां आपको फंडामेंटली पता है कुछ वगैरह। ये बहुत बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से। राइट सर। सर, अभी रिसेंटली जो शुगर को लेके जो टाइम पीरियड उन्होंने एक्सपोर्ट बैन का एक्सटेंड किया है, तो उसको लेके जो ब्रॉडली कॉन्वर्सेशन में भी हमने शुगर सेक्टर काफी डिस्कस किया था
तो उसमें कुछ बड़े लेवल पे आप चेंज देख रहे हैं, और या ये तो एंटिसिपेटेड था, तो कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट इट? बिल्कुल एंटिसिपेटेड था ये। आई थिंक वी हैड ऑल फिगर्ड आउट कि इस साल एक्सपोर्ट नहीं होगा, बिकॉज द प्रोडक्शन इज लोअर। तो एक्सपोर्ट तो नहीं होने देंगे, और हमारे पास इंडिकेशन भी आ गए थे राइस का, जब गवर्नमेंट ने बैन किया राइस, बासमती राइस एक्सपोर्ट का वगैरह, सॉरी नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट का। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था, एंड दैट वाज ऑलरेडी बिल्ट इनटू द थीसिस। उसके बावजूद भी आई थिंक शुगर सेक्टर ठीक ही लग रहा है। इट इज इट यू नो बेसिकली मुझे लगता है ये करेक्शन में अगर आपके पास कोई अच्छे नाम है तो बिल्कुल उसमें ऐड करना चाहिए। और सर, मैक्रो सिचुएशन को देखते हुए जो वॉर की सिचुएशन हो रही है, और मान लो इजराइल ऑन ग्राउंड एक्शन लेता है, तो चीजें एस्केलेट भी हो सकती हैं यहाँ से। तो क्रूड प्राइस को ध्यान में रखते हुए मतलब किन किन सेक्टर में आपको लगता है कि थोड़ा हमें कॉशियस व्यू रखना चाहिए दिस पॉइंट इन टाइम? तो एनीथिंग विच इज अफेक्टेड बाय हाई क्रूड प्राइसेस, क्रूड डेरिवेटिव्स है वगैरह, वहां पे देखना है आपको कि सिचुएशन कैसा है। डिमांड अच्छी है तो आई थिंक प्राइस हाइक विल बी पास्ड ऑन, बट अगर डिमांड अच्छी नहीं है तो दिस कंपनीज विल हैव अ कॉन्ट्रैक्शन इन मार्जिन्स। तो हायर क्रूड इज नॉट गुड फॉर अस। आई मीन अगर मैंने एक इंटरव्यू करी थी, एक आई थिंक एक दो हफ्ते पहले ही, आई थिंक ईटी नाउ में, जहाँ पे मैंने ये सब मैक्रो हेडविंड्स विच वी सी इन द शॉर्ट टर्म उसको एलेबोरेट किया था मैंने। जैसे कि क्रूड है, वॉर है। अगेन आपको वॉर के बेस पे आपका इन्वेस्टिंग नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम फ्रॉथी मार्केट में ये रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो, मार्केट फ्रॉथी नहीं हो तो आप फिर भी बैट ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन जो ये अभी शुरू हुआ है, सपोज ये चला, तो आपको 30-40% बहुत सारे नामों में से उड़ जाएगा बिल्कुल आसानी से। इंडेक्स भले 10% नीचे जाएगा, लेकिन लॉट ऑफ स्टॉक्स विल गो डाउन 40%, 30%। तो ये होगा, आपने वो फैक्टर इन किया है। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे ना कि नया कैपिटल ये मार्केट में नहीं डालना चाहिए। आई मीन यू यू प्रॉब्ली नो, हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेना भी बंद कर दिया था वगैरह सब कुछ। हमें तो लग रहा था, तो इंक्रीमेंटल कैपिटल ये मार्केट में नहीं डालना चाहिए, वी वर वेरी श्योर ऑफ इट। तो अ, ये चीजें है, मैक्रोज है। इसके अलावा आई थिंक देयर इज वन मोर रिस्क विच इज देयर, इज अबाउट द इलेक्शंस, जो कि भी एक नियर टर्म इवेंट ही है, ज्यादा दूर नहीं है। सो यू नो, if results are not favorable, I think there will be severe correction also. तो ये एक रिस्क भी आपको माइंड में रखना है। हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम डू यू हैव द basically behavioral traits to see these 30-40% kind of drawdowns which are possible. तो वो देखे आपके आपके पास वो बिहेवियरल ट्रेट्स है, वो पेशेंस है, और इसीलिए आप ऐसे स्टॉक्स ही चुने जहाँ पे आपको कन्विक्शन हो, जहाँ पे वैल्यूएशन आपके फेवर में हो। देखो, कोई सस्ता है वो और सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर स्टोरी इंटैक्ट है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, तो वो वापस आएगा। उनको हम बोलते हैं ना टेनिस बॉल। लेकिन आप एग ले लोगे तो फिर वो वापस नहीं आएगा। 5-5 साल, 10-10 साल भी नहीं आता है, या नेवर, इट में नेवर कम बैक। तो अगेन इट इज वेरी क्लीशे, बट फैक्ट तो यही है कि आपके पोर्टफोलियो में टेनिस बॉल्स होने चाहिए, नॉट एग्स। So true, sir. Totally agree on this. And sir, we also spoke about the cement sector, which you have been time and again, even in your last interview also, you talked about it. So डिस्कसिंग की अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें ओवर सप्लाई नहीं लग रही है, बट जैसा आपने इलेक्शन रिस्क आपने बताया, तो इंफ्रा स्पेस में भी हो सकता है कि अगर जो एक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट जो मैक्सिमम लोग लेके चल रहे हैं वहां से कुछ कंट्रारी होता है, तो इंफ्रा स्पेस में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स या जो ऑर्डर बुक इन्वेस्टिंग चल रही है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो उस फ्रंट में अगर सर थोड़ा उसको एक एज अ रिस्क लेके चले, तो डू यू सी कि सीमेंट सेक्टर में भी उसका
बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को चलेगा, या जिस हिसाब से पीछे इंफ्रा की पेंटअप डिमांड रही है, तो आने वाले 1 1.5 साल 2 साल अच्छे ही लग रहे हैं सर? हाँ, so one thing I think you will be surprised to know कि cement cost in a infra project is only 5%. Okay, तो बहुत बड़ा सीमेंट का cost in the overall project is not that much on an average, even and real estate में तो उससे भी कम है. तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट रुक जाएगा. एंड देन लॉट ऑफ दिस कंपनीज हैव 3 4 year काइंड ऑफ ऑर्डर बुक्स एंड ऑल दैट. तो बट देन अगेन, अगर इलेक्शन रिजल्ट फेवरेबल नहीं आए तो देर विल बी अक्रॉस द बोर्ड करेक्शन इज व्हाट आई थिंक. आपके लार्ज कैप्स कम करेक्ट होंगे, एक्सक्यूज मी, बट आपके स्मॉल कैप मिड कैप्स तो करेक्ट हो गए अक्रॉस द बोर्ड. तो वो रिस्क तो है ही है, दैट इज अ मार्केट रिस्क. स्पेसिफिकली ऑन स्मॉल एंड मिड कैप्स, एसएमई के तो बहुत बुरे हाल हो गए मुझे लगता है. और रिगार्डलेस ऑफ दैट एसएमई के हाल, मतलब ये गवर्नमेंट अगर देयर इज अ कंटिन्यूटी वगैरह, तो भी एसएमई में तो बहुत ही ज्यादा फ्रॉड है. दैट इज वन सेक्टर विच वी आर कंप्लीटली अवॉइडिंग, एंड वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. सर, इन इन लाइन ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन द यूएस, तो अभी मान लो जो लार्ज कैप हमें वेल प्लेस्ड लग रहे हैं, और यहाँ से भी एफआईआई का अगर उसको और पैसा यहाँ से मार्केट से पुल करेंगे, तो वो पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट अपने मार्केट्स पे भी रहने वाला है. तो उस सेंस में देखें तो सर, लार्ज कैप में भी अच्छी खासी करेक्शन हो सकती है अगर एफआईआई विल कीप ऑन विड्रॉइंग द मनी. नो, और आई उस फुल्ली आई फुल्ली और अग्री. उस जी. बिल्कुल अग्री करता हूँ. मतलब मेरा ये बोलना है कि अगर अगर आपका स्मॉल कैप 50% करेक्ट करेगा तो आपका लार्ज कैप 15 20% करेक्ट कर जाएगा, 20 25%. सो द फॉल विल बी लोअर in large caps is what I think. But then again, even now when I'm seeing most most of the large caps are still very expensive. तो ऐसा नहीं है कि आपको लार्ज लार्ज कैप्स में अक्रॉस द बोर्ड आपने कॉल ले लिया और आप बच जाएंगे, बिकॉज many are still at historical high multiples. तो और ग्रोथ स्लो डाउन बिल्कुल दिख रही है. मैं वो एक स्टडी कर रहा था थोड़े दिन, मतलब लास्ट 2 3 दिन से इसी पे, कि हम लोग सभी लोग लार्ज कैप्स का देते हैं और वो लास्ट 10 years में इतने ग्रो हुए, लास्ट 20 years में इतने ग्रो हुए, लास्ट 10 20 years में इतना फ्री कैश फ्लो दिया है. बट आई बिलीव ये हिस्टोरिकल नंबर्स पे जाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, बिकॉज इनके ग्रोथ रेट्स क्लियरली स्लो डाउन हो रहे हैं. बहुत सारे नामों के which are very favorites of the markets. I can see growth slowing down in many of them, and I'm almost sure that next 10 years growth rate will be lesser than what they did for last 10 years. But multiples are still very high. So large caps maybe you have to be very very selective. There could be some opportunities obviously. तो वहां पे ही है, अक्रॉस द बोर्ड में बोलूंगा कि लार्ज कैप्स में भी सेफ्टी नहीं है. राइट सर. एंड सर, जो पैकेजिंग है विच इज बेसिकली अ प्रॉक्सी टू एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर एंड अदर कॉस्मेटिक्स आल्सो, सो डू यू सी लाइक these proxy plays can be a good investment bet, just in case you had gone through those companies without naming them obviously? हाँ, सो पैकेजिंग सेक्टर, आई मीन आई ट्रैक वेरी वेल, स्पेशली पॉलीफिल्म्स वगैरह में. एंड वहाँ पे तो आई थिंक देर इज गोइंग टू बी अ बिग स्ट्रगल, just because huge supply has come and is still coming over the next 2 3 years. तो वहाँ पे तो मुझे तो लगता है, मैंने तो आई हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट इट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 2 quarters now, that the cycle has turned. और वो कैपेसिटी एब्जॉर्ब होने को वगैरह टाइम लगेगा. उसके ऊपर से वापस आपके एफएमसीजी सेक्टर में भी स्लो डाउन है. आपके लार्जेस्ट कंपनी ने सिर्फ 2% वॉल्यूम ग्रोथ दिया है इन सपोजिटली कंडीशंस वेयर द इकोनॉमी इज डूइंग वेल. द इकोनॉमिक ग्रोथ का भी आप 1/4 अगर आप ग्रोथ करोगे इन वॉल्यूम टर्म्स, तो इट डजंट बोर्ड वेल. सो पैकेजिंग में मुझे बिल्कुल भी आई हैव नो इंटरेस्ट नाउ, एंड आई डोंट थिंक आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ.
And sir, as and when we get time, we talk about the IT sector. It appears to be a mixed bag of reactions in the IT sector. Having said that, कि अभी भी जो companies की, especially the large ones, जो उनकी guidance है coming quarters की, that is not promising at all. तो आपको क्या लग रहा है? तो staying away from these companies, especially in the IT sector at this point in time would be wise, or there are still you see some opportunities in the small or mid caps? So we have seen some opportunities in some, IT product companies. Okay. And in the last 2 years, we have recommended two of them. Okay. Luckily, both have done very well. And that is the area which we were focusing on. IT services, we were out. There are some names who have done well. But then valuations were not in favor, even in those. And they were expensive and they become more expensive now. Uh, so, so that is what has happened. I still think you see that some of these companies are at 25, 30 times and they are going to grow in single digits. So how do you justify the valuations, for us? And especially with lot of headwinds, I think what is happening across the board, there is headcount reduction is happening. There is squeezing from the clients because they are telling that some of the work you should get it done through AI. Uh, all these headwinds are there. So growth is going to be challenged uh, for these guys, and especially when your target market is not going to grow too much. How can you grow? So with US and Europe, facing a lot of headwinds, uh, it's going to be difficult for them to show growth. So uh, obviously, in many companies, prices have run up despite this thing, but they are nowhere close to what they were even, I think, 1.5, 2 years back. So in that sense, a correction is set up. Some rebound has happened, but we will still stay away completely. Right, sir. And sir, like large cap में जो private banks हैं, especially वो काफी रेस रहे हैं या हल्की फुल्की करेक्शन ही रही है, तो वो आई मीन मेरे ओपिनियन में थोड़ा बेटर प्लेस लग रहे हैं. तो सेम ओपिनियन, और यू डू नॉट सी दोस एज गुड एडवाइस because they are mere compounders, broadly you can say that. Yeah, so I think I agree to you completely actually. So that's why I said there are some pockets in large caps where there is still investments can be made, and some banks are there obviously where you can do that. Uh, and I think we've had great returns in the last few years, right? Uh, if you are sure of that some of them will compound, it might not be a bad addition to your portfolios, is what I think. Uh, Especially with the with the headwinds we have. That is one place where we can basically hide in a sense and have some returns hopefully in the next 2, 3 years also. Uh, and quite a few banks are at very decent valuations and doing quite well. करेक्ट सर. एक दो क्वेश्चंस लेते हैं. आशीष, आप अनम्यूट करके अपना सवाल रख सकते हैं, और उसके बाद हम भारत के पास आते हैं. आशीष जी, बताएं. Yeah, thank you, Prince, for the chance. Yeah, sir. So, Jiten sir, my question is basically, सर, जिस तरह से स्मॉल कैप्स की रैली हुई है पिछले कुछ समय में, और आज का करेक्शन या जो भी है, मतलब लाजमी था कि होगा ही. तो लाइक प्रिंस मेंशन कि हमें प्राइवेट बैंक्स में कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है. इन सिमिलर वे स्मॉल कैप्स के बाद भी डू यू थिंक कि मतलब जैसे पावर थीम हो गई या ईएमएस थीम हो गई, ये सब अब काफ़ी महंगे हो चुके हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलना भी थोड़ा, मतलब विल हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क देयर. तो आपको लगता है कि स्मॉल कैप में भी अभी भी हम बेसिकली प्राइवेट बैंक्स लाइक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या मतलब अभी थोड़ा इट्स बेटर टू स्टे विद Yeah. लार्ज कैप्स? So again, what last minute timing kind of thing,
I don't know. I don't think I can do it, to be honest. But value है in some of these. Power में yes, names have run up, but then you can also look at power ancillaries. No, I think power sector will do very well. So power sector अच्छा करेगा. आप डायरेक्ट नेम नहीं तो इनडायरेक्ट नेम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. यू नो वहां पे भी काफी स्टॉक्स है, जैसे वी होल्ड फ्यू ट्रांसफॉर्मर कंपनीज एंड ऑल, एंड some other companies catering to the power sector. They've done extremely well, and their outlook is also still good. So despite having, big returns, we are still holding on to some of these names because outlook is good. Uh, and though, I will not buy them at this point in time, but I would want to hold them because growth तो दिख रहा है इन कंपनीज में. तो that is how, ये रिस्क की बात है बेसिकली. फॉर मी द रिस्क इज वेरी वेरी लो बिकॉज हमारे हम लोगों ने फ्रैक्शन ऑफ द करंट प्राइस पे बाय किया है, तो हमारी रिस्क अलग होती है देन somebody who buys now. उसकी रिस्क अलग होती है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड होल्डिंग पावर अलग हो सकता है, एंड ऑन द वे वी हैव बुक सम प्रॉफिट्स ऑल्सो. तो हमारे लिए बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पे 30-40% का करेक्शन इसमें आ जाएगा तो भी वी विल स्टिल नॉट पैनिक. whereas somebody buying now in these names which are, I think fairly valued now or slightly overvalued in many cases, वो डिस्पाइट सेक्टर गोइंग टू डू वेल, करेक्शन तो बिल्कुल आ ही सकता है. और करेक्शन आया तो आप 30-40% करेक्शन में फ्रेश बाई में आप विल यू बी एबल टू होल्ड? दैट इज द क्वेश्चन. एंड दैट इज व्हाई आई से फॉर द सेम स्टॉक different people have different risks, and that is something which I think we all should understand. Okay, sir. Okay, thank you. And one small question, just last one. Sir, in this environment, do you think we should, I mean, so today basically I don't have a capacity to sit with cash. I usually deploy everything what I have because I've already stocks which are shortlisted. So in this environment, do you feel is it good to wait for some more time? Personally, I don't have cash, and whenever I get cash, I literally deploy everything and just watch my portfolio degrowth or growth, whatever happens. So, what according to you will be a sensible move going forward, at least for short, medium term, if not So long? again, there could be no one answer for this, no, basically because your risk taking capability, your income sources is something which you would know, I would know. So it will be very, very difficult for anybody to talk about that. It really depends on person to person. Uh, if you have cash flow coming in through job or through business or something, you might as well go and invest. And for somebody who doesn't have other active cash flows and all, for them it might make sense to wait to have some cash and so on. So the answer will be different for different people, to be honest. And that is something which your investment advisor can tell you what is right for you. Uh, but having said that, it will be very, very difficult to, basically say that, I can deploy now or something. What I always say is that, deploy slowly because you are not sure how long the correction will last or how much it will be. Uh, and it all boils down to basically your conviction and your view that you are buying stocks for 3 years or 5 years, or you're buying stocks for 6 months or 1 year or 3 months. So different answers for different people is what is the case, to be honest. And Ashish, as sir and our other speakers caution our audience from time to time that always maintain कि जो आपका जरूरत का पैसा है which you will need maybe 2-3 years down the line, उसको आप इन्वेस्ट ना करें. और मार्केट में जो फोमो की इन्वेस्टमेंट होती है उसमें चैलेंज क्या आता है कि आप एब्सर्ड वैल्यूएशंस पे यू एंटर एंड the moment panic enters the market, you try to get out from the market at the wrong time, right? तो सबका ऑल्दो इंडिविजुअल है, जिनका फाइनेंशियल एडवाइजर की एक्सेस है, ऑब्वियसली वो उनसे कंसल्ट करे.
कुछ ऐसे हैं जो अपने आप से इन्वेस्ट करते हैं और टिकट साइज भी स्मॉल रखते हैं। उनसे ये सर का जो है बिल्कुल सही एडवाइस है कि आप स्लोली और ग्रेजुअली आप अपना पैसा डिप्लॉय करें, और जहां पे भी आप पैसा लगा रहे हैं उसको आप एटलीस्ट इतना ट्रैक करें कि यू आर एबल टू मेक अ सेंसिबल डिसीजन, चाहे आप उसको किसी के आइडिया के बेसिस पे ही इन्वेस्ट क्यों ना कर रहे हो। और जितेन सर से हमारी इस बारे में भी बात होती रहती है, इट्स हार्ड फॉर अस टू एक्सेप्ट कि म्यूचुअल फंड से भी पैसा बनता है। तो सर इस पे भी थोड़ा चर्चा करते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि जब तक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे उनका पैसा नहीं बनेगा। So I will tell you, investor who doesn't have some background and some knowledge, and who is relying on only tips, or for them it would make sense to do two things. One is, if you want to invest directly in equity, then you have a good advisor, okay? uh, or you are better off doing mutual funds, okay? See, again, I'm not going to give any investment advice, but there are certain things which people can do even in mutual funds, okay? Which I do. So depending on the situation of the markets, I will I will start SIPs. Especially, I don't do it in my this thing, but for my children and for my wife's account and all that, we do SIPs also, right? Uh, and depending on the situation, I start SIP and stop SIPs uh, accordingly. So basically, when the small caps are completely beaten down or something, and uh, trailing returns are poor, negative, that is when I will start a SIP in small cap. Uh, and when these returns, go up about, let's say, 25%, your XIRR gets to that situation, maybe it is a good time to stop that SIP and have a plan of reducing from those funds. Uh, and vice versa with large caps. When large caps starts performing, let's say 18-20% returns, they kind of give. That is the time to, basically XIRR I'm talking about on your SIPs. That could be a good time to, basically start deboarding from there. And when they come to, let's say, single digit kind of trailing returns and all that over, let's say, 1 year, 3 year kind of period, that is the time to start deploying or starting a SIP in the large caps. What happens is everybody changes performance and invests in funds which have given performance. And often what happens is it turns out to be a disaster, because market cycles work in different ways. Uh, Many times large caps do well, and many times small caps do well. Uh, and basically, if you chase performance, then the cycle of that particular sect may change, and you will underperform. And that is what happens most of the times. So anybody who's been doing, who started SIP, let's say in small caps now and all, there are chances that they will see, very poor returns. Uh, Whereas somebody who would have started in 2018, let's say SIP, they would have seen very good returns. Uh, Again, uh, one thing I've observed is that over a long period, we see the good small cap funds always outperform large cap funds and flexi cap funds, because the small caps, the growth chances are higher. So, but in that, your manager is very, very important. Uh, it is important in large cap, but far more important in small caps. So, being with a good manager is also very, very important. But these small caps, though they give higher returns over a very long period in time, they are extremely volatile also. So you will see periods where they will severely underperform. 3 years kind of negative. 3 years you will have negative IRR and so on. 4 years, 5 years. But let's say you take a 10-year period or something. What I have observed is that small cap funds generally outperform. Now the balance, the thing is, it really depends on you whether you will continue your SIP when things are down and so on. Uh, and when they are not performing, but the fund manager is good, the fund is good. So these are the things, mostly behavioral traits.
you should basically uh, you know uh, keep an eye on. Right. So before coming to Bharat, Rahul and Vipinji, Jiten sir, you rightly said it's the looking for the fund manager is very important. And these days, I am observing the incremental cash which is coming to the funds through SIPs. Right, they themselves are like facing a challenge so as to deploy that money in the small cap space where valuations appear to be crazy. Right, so they are also in dilemma. So sir, what had been your experience, like how how the fund managers go about it, and they have some compulsion to deploy, or there are other instrument also from which they can, I mean, for some time in time they can, I mean, pass on the market situation and let things stabilize before deploying that money. So most of the times, large AUM is an enemy of the fund manager. To be honest, enemy of returns. Uh, and that you will see funds when they were far smaller in AUM, their performance is always better and higher. As they become large, the performance drops. There will be always some exceptions, but more often than not, that is what is going to happen. So it's again a dilemma. It's not that you've done mutual fund investing and you just sit and then you do nothing. You got to review, at least once a year, your investment in mutual funds. See what the AUM is. If the AUM is too large, then you should look for alternative. More often than not, it will start underperforming. So there is no easy way in that sense कि म्यूचुअल फंड में डाल दिया और फिर आप आराम कर लो, वैसा नहीं है। अगर आपको आपके रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करने हैं तो आपको ये सब काम म्यूचुअल फंड में भी करना पड़ेगा। अ, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फंड मैनेजर जो था ये मूव टू समबडी एल्स, सम अदर न्यू फंड मैनेजर हैज कम, you don't know their history, you might give them some time, but chances are that they might not be able to give the same performance, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है इवन इफ यू डू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। Right, sir. So we also got Rahul. So Rahul, any points to talk about the topic, or maybe any question to Jiten sir? So whichever way is more comfortable. No, I wanted to share my thoughts on this, right? So, if the people who are listening to this spaces, if you're surprised by the small cap fall in the small caps today, then it just shows that you've been missold small caps. What is happening is the nature of a small cap. It rises fast and it falls very hard. And if you're surprised, if you're disappointed, if you're shocked, then you're probably not in the right space, anyways. That's one. Second is that I go back to my same idea, which I keep repeating. It's all about allocation. If you had allocated your money well today, it's a normal day, right? There is there is nothing wrong in the day today. The large caps didn't fall much, over 1%. That's nothing. But if you had only small caps, you were, I believe it was 4% at the index level, individual stocks. I saw a list somewhere, 10% was like all over the place, down 10%. So if you allocate well, you're fine. If you don't allocate, you have a challenge over there. The third thing, which I kind of just want to sort of raise, is that I don't think higher returns in small caps are guaranteed. Uh, I think that, and history will tell you, and I think when Prince, when we did the spaces with Devina, she will, I think, didn't she say that there was an 8 year period where there were no returns in small caps, 8 or 9 year period? So the point I want to make is that please don't take it for granted. Uh, please don't take it for granted. Returns from small caps are not guaranteed. So if you've over allocated, you've taken a hit, adjust. Uh, just because small caps have fallen today doesn't mean they become cheap. Uh, Even more so at the small cap level, it's stock specific as compared to large caps.
Small caps don't share much characteristics between each because they're such niche businesses. But in the large caps, you can still sort of think of baskets and all that. So prima facie, the one of the reasons I wanted to join the call today, I want to call out the people who've joined. That if you're not worried today, you probably allocated well. Pat on the back for you. If you're worried today, relook at your allocation. Hopefully you've not lost a lot of money. We don't know what the market will do next. None of us know whether it'll go up or down. But get your allocation right here, guys. It's like we always say, investing is simple, but it's not easy, right? It's very simple, but the process of going and doing the hard work and then getting rid of the excesses, that is the tough part. And I hope today's reminder will help you move along that path. Prince? Right, Rahul, agree to your point. But again, those who understand the space better and are able to pick companies where they have a fair understanding of the business. Obviously, small caps are a space where one can generate alpha. But you rightly said asset allocation is equally No, important, but and it's an no, but I individual. don't. But Prince, I don't agree with that. That small cap is the place to generate alpha. You can generate alpha in large caps also. There So, is, it's okay. Well, nowhere written. yeah, It's yeah. nowhere written that alpha is available only in small cap stocks. Yeah. Agree, Rahul. But again, we'll invite our other speakers to buy this argument. So, Jiten sir, you have any view around this topic? Then we move to Karan and other speakers also. Yeah. So again, it will not be fair to take 1 day performance and paint a picture. To be honest, is what I think. Over the last 6 months, small caps and mid caps have done far better than the Nifty. Okay. Uh, and that's the nature of small caps and mid caps. They will rise more and they will fall more. So if market continues to fall, they will fall more, obviously. So the volatility is higher, uh, the risks are higher, and potentially. So again, there is nothing, that large cap is not the way to do or anything like that. It depends on person to person. But uh, the thing is that the chances of you are performing in small caps and mid caps is higher if you have done the basics right, is what I say. And primarily that is because of valuations. More often than not, large caps are fully discovered, fully covered, and richly valued. And there will be uh, small caps which are not discovered, which are not covered and not valued. So that edge a small cap investor can have, obviously, over a large cap investor, is what I think, uh, and can generate that higher return. That is definitely there. I mean, and this I can say from almost 30 years in the market. Uh, but at the same time, it is not fit for everybody. I agree to Rahul in that sense that allocation is important, and it all boils down to there are still a lot of large, very big investors who are still in small caps. Okay, and they might be having portfolios of 1,000, 2,000 crores also, but they are only in large small caps and mid caps, and they've done phenomenally well. Okay, and then there are others who have done very well investing in large caps also. So I'm not saying that one is better or the other. It really depends on person to person. Uh, the appetite for risk should be there when you invest in small caps and mid caps. They are risky. They are more volatile, and anything which provides a higher risk will always provide a potential higher return. That is the law of the market. But at the same time, you have to understand that the risk is also higher. That's my limited submission.
So true. And on the aspect of like when the majority of market participants do not carry those skills so as to choose all the good companies in that space, so it is fair to conclude that asset allocation is a savior for them. So before coming to Aditya, let's have quick view from Karan also. So Karan, we were discussing about today's correction, and although it's a one day correction, nothing substantial, but again people are in panic and their portfolios have a drawdown of 5-6% or maybe more. So I mean, how had been your experience in last 1.5 decade with these corrections, and how you place yourself during those corrections? See, I mean, the answer to that is pretty simple. They come and go. They are not usually this sharp. I'll just say two things. Where an individual investor finds value, if they are doing individual stock picking, I think any stock we pick, the market cap plays a role in how we select stocks. But beyond a point of time, I'm not going into a stock why what its market capitalization is. I will look at the valuation parameters. Look at the business. I'll see the underlying strength if I find it there or I find valuation comfort. That's why I'm getting in. So anybody who's in the market to make a quick buck, days like today pain them the most. Anybody who's picking up stocks based on themes or narratives or story, they feel the heat the most. And you know, the markets are looking for reasons to just get down. So we had a weak start to the day in the US. Also, we are seeing now things are happening with Iran, with Lebanon, and all of these other things that are coming up. But we've seen a pretty long period of a one-way journey over the last at least 5 months now. If we look at post 31st March, there will barely be any market segment except the large caps if we are going purely by capitalization. But from a sectoral perspective, there'll barely be any sectors. Perhaps pharma could be, an outlier where the market has not done increasingly well. So when you have such a broad-based rally for such a long time, and I think there was just one breather that happened, if I remember correctly, it was 12th of September, where again things had fallen 4 to 5% in one day, or maybe 24. We've not really seen a breather in anything. And markets are always, a combination of liquidity and what is happening in this ecosystem. Whether it is FIIs coming in, whether it is domestic institutions and what they're buying. So, SIPs are not going to stop today. And all those domestic institutions have to buy this month and next month and the month after that. It's when the SIPs start breaking on a 3 month level, on a 6 month level. That's when we should be thinking about, okay, from a liquidity perspective, things have changed in the market. But if you're buying stocks, you are not looking at, who's coming in. And I mean, I've shared before, I invest in micro caps and small caps. I don't expect domestic institutions to come. I don't expect FIIs to come. All I know is that when the situations I'm playing, they play out, the market will come and Twitter will be full of the stories. Twitter will be full of stories about those stocks. But those are probabilities I'm playing, and probabilities, their outcomes are not sure. And my portfolio on any given day basis will have, a higher beta than what the market is doing. So if I'm down 5, 6, 7% today, there is a fair chance I've done fairly better than the market, fairly better than what the Sensex or the index has done, and what even large flexi cap mutual funds have done over the past 2, 3, 5, 6, 10 years. But I am in it for the long haul. I know that what percentage of one's portfolio is allocated to equities. All of those things play a role. And days like today, perhaps we'll see 10 of them in the next 10 days. Perhaps everything will come back, because everything until Friday was India is getting to be the best country to invest. I think Morgan Stanley said something around, I think they used two adjectives in conjunction for us. I think that something like stupendous overweight, or I don't remember what the numbers were. So things couldn't have changed in 72 hours so much that, we've gone to where we have. So, I mean, let's continue to stay in the game. We have cash on days like today.
just deploy it. I mean, the market's down 5%. We are keeping dry powder for this reason. Let's just keep deploying it. If we don't believe in that company because it's 10% down today, why was it so good, when it was 20, 30% down X number of weeks ago? So if you have this money, you want to keep it invested for the long term. Any risk that was there 3 months ago stands today for that industry, for that company. Today is simply, looking at it as a shakeout. I don't think there's any other way to look at it. No stock market reacts in a way like this, where everything is worth 10% less than it was yesterday on any fundamental reasons at all. So that's my thoughts in a rather large nutshell. Great. Fair points, Karan. So, Aditya, you had your hand raised, and then we go to Rahul and Ravikant. So, Aditya, over to you. Yes, hi, Prince. Good evening. So, as everybody was discussing, I just wanted to have some limited 2 points, very short points. Point number one is, as we had also discussed during our last phase, that there was a little bit of euphoria that was going on within the small and the mid cap space. People were chasing aggressively the small and the mid cap stocks. Of course, the potential for a small and a mid cap could be faster than a large cap in the short term. However, the valuations were getting stretched. We have written also, Jiten sir has also written about order book investing and how people were just getting on board with order flows that were coming in. And because of that, the stocks were really rising very, very quickly. Of course, the potential is there, but the execution will come over a period of time, and all of that was getting priced in very, very quickly. So ये तो करेक्शन कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब बहुत ही छोटा सा करेक्शन है, considering the fact that we have not seen a correction over a period of 4-5 months. तो इसमें तो बिल्कुल भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. And the last point that I want to make is, within this dichotomy of the large cap and the small cap and the mid cap space, I feel that anybody who invested in ITC, which is really a large cap stock. Aditya, you got muted. Yeah, can you hear me? Yes, right now. Sorry. Yeah. So anybody who invested in ITC over the period of 2018 to 2020 made a lot of money. Now I'm not considering the dividends. So this narrative that the large caps cannot create returns as compared to small caps is incorrect. You need to identify of course, large caps are broadly identified by the market, but you need to identify where on the large caps the market is mispricing short-term pain. Similarly, on a large private sector bank today as well, I feel that the pain is very overdone, and those who can invest today could end up making a lot of money as the cycle really turns out. तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर जगह पे पैसे बना सकते हो, प्रोवाइडेड आपको समझ में आ रहा है कि उस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है. बिजनेस के अंदर आप सही से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप तीनों मार्केट कैप्स में पैसे बना सकते हो. हाँ, ये हो सकता है कि आपको लार्ज कैप में ऐसे 5, 10, 15 और बैगर्स इतने क्विकली ना मिले, बट लार्ज कैप्स में आपको स्टेबिलिटी मिलती है जो कि स्मॉल और मिड कैप्स में नहीं मिलती है. तो सब सारे स्टॉक्स की अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती है. हमने ये बनाया कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड सी वेयर द रिस्क रियली इज. टुडे इन माय ओपिनियन लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल भी रैली नहीं हुई है पिछले 10, 12, 14 महीने में, जबकि स्मॉल और मिड कैप्स बहुत ही ज़्यादा ओवरशूट हो गए हैं. देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन विद इन द स्मॉल कैप्स, एंड लार्ज कैप्स कुड कैच अप, और हो सकता है कि लार्ज कैप में कुछ ना हो जबकि स्मॉल एंड मिड कैप्स में करेक्शन हो. सो द पर्सपेक्टिव इज, इस रैली के अंदर आप कैरी अवे मत हो जाइए. आप बिजनेसेस को स्टडी कीजिए. अगर आपके बिजनेसेस आपको बहुत अच्छे लगते हैं, द कैश फ्लोज in Q2, I just want to point out this. In Q2, the most important thing that anybody should watch out for within the small caps is the cash flows. Cash flow statement, they are mandated by SEBI to release a cash flow statement every 6 months, and in Q2 they will release. And you need to relate the profits with the cash flow. If the profits are not converting into cash flow, then there is a big problem for your company. And I have seen so many SME and small cap companies have rallied 4, 5, 6x, whereas the profits are not relating to the cash flow. तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए, क्वालिटी ऑफ बिजनेस के ऊपर ध्यान रखिए, एंड
आप इन छोटी छोटी करेक्शन से घबराइए मत। हमने मार्केट में इतने सालों में बहुत सारे बड़े करेक्शंस देखे। लास्ट थिंग आई वांट टू से इस करेक्शन आएंगे, करेक्शन जाएंगे, बट स्मॉल मिड और लार्ज कैप सब एवरीथिंग will continue to keep moving up in a growing country like India. You must have at least a time horizon of 5 to 10 years minimum. तो मतलब बिल्कुल आदित्य, पैसा आपने ठीक पैसा बोला। पैसा बन और सर एक छोटा Can सा I, पॉइंट। हाँ Prince? हाँ Can सर, I? प्लीज I प्लीज। just yeah. So very good views by Aditya. So ये समझना जरूरी है, and I'll tell you some of my experience also. Okay, last 2-3 साल या जो भी last 3 years में बोलूंगा तो I have large caps in my portfolio. I have mid caps, small caps, और वो जो भी large portfolios है उनको रखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, but there are large investors who are only into small and mid caps. Again, different people, different philosophies of investing. अभी मैं इतना बोलूंगा कि लास्ट 3 साल में मेरे लार्ज कैप्स प्रोबेबली हैव नॉट गिवन मी द रिटर्न्स व्हिच माय स्मॉल कैप्स हैव गिवन। ओके, ये फैक्ट है, बट डज दैट मीन दैट दे आर नॉट गुड? नो, उनकी एक अलग जगह है, उनका एक रिस्क अलग होता है। ये हम हाइंडसाइट में बोल सकते हैं लास्ट 3 इयर्स बहुत अच्छे गए वगैरह। देयर आर स्टॉक्स व्हिच हैव गॉन अप 20x फॉर मी आल्सो, बट ये मुझे पता थोड़ी था कि ये 20x होने वाला है। अगर होता तो मैं मेरा घर भी बेच के उसमें लगा देता। तो पॉइंट इज दैट आउटकम्स आर अनसर्टन and the risks are different. You need to have balance. If you want peaceful sleep at night, and it's right, you can't basically bracket anything. जैसे आदित्य ने आईटीसी का एग्जांपल दिया है, इट हैज डन वेल। अभी इसमें एक मजे की बात यह है कि जब आईटीसी started doing well when nobody was looking at it and everybody was basically trolling it to the limit, और अब जब आईटीसी in the last 2-3 quarters when ITC is in limelight, it has stopped performing. तो ये बिल्कुल होता है। दैट्स व्हाई आई से नो, वो एक बार डिस्कवरी हो गई उसके बाद आपका बड़ा रिटर्न नहीं बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट आईटीसी मुझे हर साल डिविडेंड देता है फॉर एग्जांपल, तो इट हैज अ डिफरेंट प्लेस इन द पोर्टफोलियो। और देयर विल बी सम अदर स्टॉक्स व्हिच गिव मी वेरी गुड डिविडेंड्स। मेरे इन्वेस्टेबल इस पे अभी मुझे 7-8% का 9% का डिविडेंड डील दे रहे। फॉर मी that provides a lot of stability, lot of peace of mind, एंड आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपने सब स्मॉल कैप में डाला होता तो आपका रिटर्न तो बहुत ज्यादा होता था, पर ये सब हाइंडसाइट की बातें हैं। हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, 3 महीने में क्या होने वाला है। हमको रिस्क कंट्रोल में रखनी चाहिए, एंड बेसिकली इन्वेस्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप रात को सो पाए। आज भी अगर मार्केट डाउन है, इट शुड नॉट डिस्टर्ब योर स्लीप। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ इट डिस्टर्ब्स योर स्लीप, देन आई थिंक यू शुड नॉट डू इन्वेस्टिंग। सो फ्यू टेक अवेज इज लाइक पैसा बनेगा, किसका बनेगा इस पे डिबेट हो सकता है, और सेकेंडली एक मीम पोर्टफोलियो हमारा होना चाहिए ताकि वो एक अपने आप में कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग हो जाए। जोक्स अपार्ट, विपिन जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं जितन भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो भी आपका पोर्टफोलियो उसको आप इस तरीके से मैनेज कीजिए सो दैट कि आपको रात को नींद आए। देखिए, इसमें मैं कुछ जोड़ना चाह रहा था कि इन्वेस्टिंग करने के लिए जो आपको चाहिए वो सिर्फ चाहिए पैसा। 90% लोग जो आज की डेट में मार्केट में पैसा बना रहे हैं स्मॉल स्मॉल कैप में या मिड कैप में, वो ज्यादातर मैंने जो देखा है मेरे अपने अनुभव से, आई मे बी रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, कि वो बोरोड कन्विक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर उनके पास पैसा है, किसी ने बोल दिया तो उन्होंने लगा दिया। तो इन्वेस्टिंग इज नॉट एन इशू, बट जो कब सेल करना है ये भी आपको देखना है कि सेलिंग इज एन आर्ट, इन्वेस्टिंग इज जस्ट रिक्वायर सम मनी। So, when to sell, how to sell, that is the most important factor in the market. So, you have to learn that also. Jiten sir, would you please add something on this? Yeah, so I've always found
buying is the easiest thing. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. To be honest, there are three things: buying, holding, and selling. Okay. Uh, People might have different opinions on this thing. Merely buying is the easiest decision and the most easiest thing to do out of these three. Uh, and second easiest would be selling, and the most difficult is holding. Nice. So जी सर. Rahul, you had your hand raised, and then we go to Ravikant. Yeah, I don't want to be the party pooper over here, but I I think it's important for everyone to understand that we are in the midst of a small cap mania. Most people are over allocated to small caps and mid caps. You start the discussion there. See, all the points that have been mentioned are valid. They can't be disputed. You should buy companies which are good, look at valuations, then you enter. All that is perfect. But where we are today is, of the hundreds of people that have joined Prince's brilliant spaces today, there's a fair chance that most of them are over allocated to small caps. If they are smart, they're probably over allocated to small cap funds, which are little less volatile than owning individual small cap stocks, which are the more aggressive investors. So my limited point is that today's fall, like I wrote, one day does not a trend make. This is not a trend. We don't know. We'll come to know with the benefit of hindsight. But this is a nice reminder for everyone. Go back, do your homework, be sure you're allocated well. And again, I reiterate, there is no guarantee that small caps will deliver better returns. There's no guarantee. There could be 8 year periods. I think, Prince, you should pull that up somewhere. I think Devina said there was an 8 year period when small cap funds gave zero returns. So if you're willing to live with 0% return for 8 years, and then in the ninth and 10th year the market goes up three times, which means in 10 years you tripled your money. That's not a very fancy return, by the way. So again, I just want to. I don't have much else to say except I want to use this as an opportunity to remind everyone: please allocate well. Most of you are probably over allocated to small caps and mid caps. This is a nice reminder to go back and do your homework. Most people should typically have the largest chunk of their holdings in large caps. I'm talking from the perspective of a retail investor. Most people should have most of their money in large caps. They should have some in mid caps and the tiniest bit in small caps. And none of the fund managers are going to agree with me, but this is a proven formula that has worked for donkey's years. You can make a nice, healthy, I'm going to guesstimate here, 15-18% per annum return being a lazy investor, which is phenomenal. Warren Buffett, I think, does 19%. You'll do 15-18% without doing all the hard work. Over a few years, the money will compound and you'll be happy without having to ride a roller coaster, which is up, down 5-10% every day. So those, Prince, were my final thoughts. If you have a question, I can answer, or I'd like to take your leave on that count. And if anyone has a question, they can always DM me, and I'd be happy to answer. Yeah. Thanks, Rahul. Jiten sir has something to add. Yeah, Jiten sir. Yeah, I'll read. Yeah. Yeah. So, I mean, the thing is, I'll not say that, that is a solution for everybody. To be honest, that, there is one solution for everyone. That, one should be, it really depends on self. And I, you know, there could be, as I think the period which Rahul is talking about and which probably Devina talked about was, I think, 2008 to 2000 mid 30, not 8 year period, it was probably 5.5, 6 year period. But then we also have to see that in the next 1 year, these funds also gave 100% returns and covered all the underperformance in the next 2 years. So again, if you stretch the time horizon large enough, uh, then the returns could be there, provided your fund manager is good and all that. So, uh, and it is very easy to find this out. You look at, the top performing
small cap funds, their 10-year, 20-year returns, and top performing large cap funds. Now, I think that is a settled debate that small caps have a higher returns. Okay, the top small cap funds will have higher return. Now, what I mean, also one thing I have to say, the best FMG company, okay, gave zero return for 10 years. Now, how do you explain it? So, I will not, basically bracket it in such a way that, large caps are better or small caps are better. Now, for as far as retail investors are concerned, they could have an allocation, they could have an allocation uh, of, let's say, one third in large cap fund, one third in mid cap fund, one third in small cap fund. And I think they will do phenomenally well. The large cap fund will have a lower risk, lower return, lower volatility. The mid cap funds and the small cap funds will have higher volatility and higher returns. And the blended return might be good. Now, somebody will say, why not flexi cap? But then one thing is that the flexi caps are nothing but large caps right now. Most of the good or better flexi caps have such huge AUMs that they are essentially large cap funds. So anybody doing mutual fund investing, I would say that you should have separate large cap fund, separate mid cap fund, and separate small cap fund. Uh, and I do agree that there has to be a balance, but I will not say that one is better than the others. Uh, there are different risks and there are different returns. Prince, may I say something before I leave? Yeah, please, quickly. Yeah. So I actually did a piece for Mint on returns between large cap, mid cap, small cap. And if you remove the last 1 year, there was no outperformance by the small caps. So I'm happy to share that it's behind a paywall like the last time. Anyone wants that article, I'll take permission from Mint and I'll reply to your DM with that article. But you can see that piece which clearly shows that all the outperformance in small caps has come in the last, I think, 6, 8, 10 months or something. Other than that, for the last 10, 15 years, there's no outperformance vis-a-vis large caps, small cap vis-a-vis large caps. I'll be happy to share that. And but I agree to Jiten. I don't disagree with him at all. But I'm just saying that I can share that data. I think Jiten's point, if I may say something in his from his perspective, he's assuming the small cap stock pickers are as smart as him. If Jiten, I'm sure, is smart and is able to beat the other benchmarks, but a lay investor, the retail investor who's on this call, you know, for them to do this, I think is going to be a little difficult. Those were thank you for I having me on the space. see. I don't agree to the point that I'm a smart investor, Rahul, but I agree to your point very much that investor who doesn't know what is doing, who doesn't have the capability of research, doesn't understand fundamental, they should stay away from small caps. I fully agree to that. There is no doubt about that. Right. And Ravikant has been listening to this wonderful conversation from long. So Ravikant would invite your views on the ongoing discussion and also what you see in today's correction, opportunities or a small blip in the market. So, hi, Prince. It is very insightful to listen all the insights shared by very knowledgeable and expert with respect to equity markets. So अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो आई वुड स्टार्ट विथ इमरान खान कोट. पहली बात तो ये आपने घबराना नहीं है, ठीक है, बिकॉज सी मार्केट में पैसा बनता है बाय इंक्रीजिंग योर टाइम इन द मार्केट रादर देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट. Okay, and I do not subscribe personally. I do not subscribe to this distinction of small cap, large cap वगैरह, because कोई भी कैप हो भाई, मेरे लिए पैसा बनना चाहिए, वो पैरामाउंट है. शायद उसका जो सीड है, the basis, the origin to that is, one should always understand that the problem will always be in the cash flow, be the business in which you are investing or the cash flow, the individual cash flow of the investor who is investing in that business. If your personal cash flows are completely sound, then you will be automatically immune to volatility in the market. Similarly, if the cash flow of the business which you are considering, be it any cap, one of the speakers quoted Devina ji here,
So in that same period, India's one of the biggest companies, RIL, that also didn't do anything. Like there was no wealth creation, FMCG, ITC वो तो छोड़ दो, RIL जबकि पेट्रोलियम के दाम ऊपर ही ऊपर जा रहे थे. So we need to be like, more cautious when we analyze ourselves first, like, where our standing is in terms of understanding, in terms of comfort with cash flows, in terms of like, psychological capability to handle volatility. It is not the problem of small cap, mid cap or large cap. It is per se the problem of the, individual investor here, that how much volatility they can absorb. And if that is understood well, and then subsequently you are able to understand the business on which you are trying to bet, the narrative which you are trying to understand, and substantiate that narrative to the with the reality on ground, or the prospective reality which is supposed to unfold, then I don't think that there is any kind of need or worry, like, to uh, to be there from such like, blips in the market. Last but not the least, I would say that notional wealth will always, keep bouncing up and down. But the core bet here, which we all are betting on, is on the real economy of India. And India, day in, day out, is approaching more and more towards its, 3 trillion, 5 trillion, 10 trillion dollar economy target. And hence, there is no need to be so worried about it. Yeah, for fun's sake and all, it is right that ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है, but then in a very macro level of things, ये actually में एक नया सूर्योदय हो रहा है. It depends on your psyche, what you are able to see. So that's what I wanted to add. फेयर पॉइंट्स रविकांत. विपिन जी आप बोलिए, और उसके बाद हमारे ऑडियंस के लिए फोरम ओपन है. इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस टू जितेन सर, रवि और विपिन जी, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू टेक दोस क्वेश्चंस. तो जो रवि भाई ने बोला, मैं उसके 100% सहमत हूँ, क्योंकि जो देवीना ने स्टडी किया, स्मॉल कैप ने 8 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया. अब वो स्मॉल कैप में 100 शेयर उन्होंने स्टडी किए होंगे, या 250 का इंडेक्स है, या 500 का इंडेक्स है. अब स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा है. आज भी कहीं ऐसे स्मॉल कैप के शेयर हैं, वेरी वेरी स्मॉल कैप, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लेस देन 100 करोड़ मार्केट कैप और 50 करोड़ मार्केट कैप, जो आज भी शायद अपर फ्रीज लगा के बैठे हुए थे, जबकि बाकी स्मॉल कैप आपका बहुत ज्यादा बीटन डाउन था पूरे उसमें, या मिड कैप सेक्टर बहुत बीटन डाउन था. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने स्टॉक की सिलेक्शन कैसे करते हैं. अगर आपके स्टॉक की सिलेक्शन सही है, आपने उसको स्टडी किया है, और सर, आपकी, हाँ जी, एक चीज आगे, स्टॉक से भी पहले आप अपने आप को तो समझिए. दैट इज व्हाई आई सेड कि इवन बिफोर स्टॉक, मैं उसी के आपके ऊपर आ रहा अपने हूँ. कैश फ्लो में जो दिक्कत है ना, वो कितना स्ट्रांग है. अगर आपका कैश फ्लो, इंडिविजुअल कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, दिस फॉल विल बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ओके, यस, मैं उसी के इफ यू ऊपर आ आर रहा हूँ ऑन. सर. हाँ हाँ, प्लीज प्लीज मैं कैरी ऑन उसी प्लीज. उसी के ऊपर आ रहा हूँ हाँ, कि आपकी कितनी कन्विक्शन है उसकी चीज के ऊपर. वो कन्विक्शन कैसे बनेगी? जब आपने उसको प्रॉपरली स्टडी किया होगा, उस सेक्टर को समझा होगा, उस कंपनी को समझा होगा, उसकी मूवमेंट को समझा होगा, तभी आप उसके ऊपर टिके रह सकते हैं. और आज की डेट में अगर वो स्टॉक भी जिसमें आपकी 100% कन्विक्शन है, और आप उस वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर वो आज 5, 7, 10% डाउन भी है, तो आपको उसको एडअप करने के लिए वो होगा, आपके पास मोटर है. सर जी वही तो मैं बोल रहा हूँ. वो एडअप करने के लिए आपका इंडिविजुअल कैश फ्लो स्ट्रांग होना चाहिए. एंड जितना आपका कैश फ्लो अलाउ कर रहा है ना, उतना ही इन्वेस्ट कीजिए. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो मेरा मेरा बस यही कहना था कि आपको मार्केट में अगर रहना है, घबराना नहीं है. जो आपने बोला कि एक तो ये आपने घबराना नहीं है. आपने घबराना नहीं है, और उसके लिए जो आपका दिल ना घबराए, उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मार्केट को प्रॉपर स्टडी करना. अपने स्टॉक्स में जिसमें भी आप जा रहे हैं, जाने के बाद नहीं, जाने से पहले आप 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना भी आप लगा के उस सेक्टर को, उस कंपनी को स्टडी करना चाहें, उसको आप स्टडी कीजिए. और फिर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड करके उस पर जाएं.
आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे जितेन भाई ने बोला कि आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो पता होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे काट के निकलना है भाई, कम बट में। हालांकि इस तरीके के स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स इतने होते हैं कि या तो अपर सर्किट लगेंगे या लोअर सर्किट लगेंगे, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। बट उसको भी बचने के बहुत सारे तरीके हैं, वो कभी किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना देखना है, कंपनी को समझना है, सेक्टर को समझना है, अपनी जितनी जेब अलाउ करती है उससे भी कम पैसे आपने डालने हैं, सो दैट कि जब भी कुछ इस तरीके की आज की जैसी सिचुएशन है तो उसमें आप और पैसे डिप्लॉय कर सके, थोड़ा बहुत कैश में रहें। तो ये इन सब तरीकों से ही आप कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। थैंक यू। Certainly. And Ravikant bhai, just in case you have like Jiten sir हाँ has few more time with us, तो just in case you have a good set of questions for Jiten sir, तो वो भी आप जब आप बोलें उसके बाद। sir, Prince Jiten sir has been always so kind, and his understanding of markets as well as what troubles regular investor, be it part time, full time, वो इतना अच्छा है उनका कि his replies, monologues, whatever it be, they automatically address it. And even अभी भी जो सर ने बताया, that is क्या बोलूं, we are just fortunate to have those views, because it is very easy to quote names and all, कि ये पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए ये परफॉर्म करता है, वो नहीं परफॉर्म करता है। बट जितेन सर्स रिप्लाई shows his mental flexibility, and that is the primary seed जो मैं बोल रहा हूँ, psychological comfort आपका, that is that mental flexibility. If today let us say आपका portfolio, like let us say 5 crore रुपए से डाउन है या 5 लाख रुपए से डाउन है, ओके, ये आपके इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल बिल्ड्स पे डिपेंड करता है, एंड वो बिल्ड एक हद तक आपके अपने इंडिविजुअल कैश फ्लो पे डिपेंड करता है। मैं यही एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जितिन सर ने तो पहले ही बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। So, Prince, I wanted to add a couple of points. Can I go ahead? हाँ हाँ प्लीज। So, again, in my limited understanding and capability, I still think that there are certain good pockets. If we see the overall, economy as such, both internal and external, you see, दो जो मैंने एक आर्टिकल भी शेयर करा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स पुश है, दैट सेक्टर नीड्स अ गुड लुक एट लीस्ट। देन सिमिलरली जिस तरह की शॉर्टेज जेनरिक मेडिसिन की हो रही है ग्लोबली भी, and even in certain verticals in India also, I think pharma, and again it's a case of, it's a play of mean reversion also, because pharma wasn't able to do anything in past 6-8 years, if I'm not mistaken. So these two sectors need to be probed properly. Then at the same time, see, एक term use होता है K shape recovery for India's post COVID recovery. I think it is not only a K shaped recovery, the structure of our economy itself has become K shaped, and as a result of which, we will be having opportunity on both ends of the spectrum, where luxury goods, white goods, the wine consumption, premium watches and all, वो भी ऊपर जाते रहेंगे, and at the same time जो bottom of the pyramid है, because policy focus is very much focused on shifting the paradigm from wealth creation to income distribution, and as a result of which you will definitely have कंपनीज जो कि जैसे एफएमसीजी स्पेस ले लो आप, जो कि लोअर सेगमेंट को ज्यादा प्रॉपरली केयर करेंगी, okay, certain beaten down forgotten FMCG names will definitely make a comeback. Last but not the least, एक पॉइंट मैं कोट करूंगा जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। even a poor country, relatively poor country like Philippines has a per capita GDP, sorry, not GDP, per capita consumption 3 times more than India. Just imagine what happens, leave China, leave US, whatever it be, if and when India's consumption, per capita consumption, catches up with Philippines. हम लोग चाइना को ना पकड़े पर फिलीपींस को तो पकड़ सकते हैं, देन इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल टर्नओवर एंड मार्जिन्स ऑफ दीज ब्लू चिप लार्ज कैप जो भी बोलते हैं एफएमसीजी वगैरह, जो पिछले 2 साल 3 साल से चली ही नहीं है। So it's all about your perspective and understanding. If we have the right eye,
then we will be able to see in the right direction. So that's what I wanted to add. ग्रेट पॉइंट्स रविकांत. सो जतिन सर, लॉजिस्टिक्स का मैं भी सोच रहा था एंड इट स्किप माय माइंड, आई फॉरगॉट टू आस्क यू क्वेश्चन. सो लॉजिस्टिक्स एज अ सेक्टर और उसके कुछ प्रॉक्सीज हैं, तो आप इस सेक्टर को सर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और एनी व्यू ओवर इट? सेक्टर तो अच्छा लगता है, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू जीरो डाउन ऑन एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट. तो सर ऐसा नहीं, जैसे अब इतना इंफ्रा स्पेंड हो रहा है और आवर इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, तो दिस कुड बी अ प्लेस वेयर वी शुड बी लुकिंग. Yes, we should be, but as I said, we have looked at few names, but कहीं मतलब जहाँ देखा है जो ठीक लगे उनमें वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं था, तो रुके हुए हैं. बट यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, टू बी ऑनेस्ट. बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है. अ, अगर अच्छा वैल्यूएशन पे कुछ मिलेगा तो हम लोग डेफिनेटली कंसिडर करेंगे. इट इज अ सेक्टर विच आई वांट टू बी इन्वेस्टेड इन, पर अनफॉर्चुनेटली अब तक कुछ मैं कर नहीं पाया हूँ. राइट सर. आई ऑल्सो वांट टू गिव एन एग्जांपल. जैसे मैंने बोला था ना कि लॉस बुक करने को आना चाहिए वगैरह. टुडे आई हैड अ पोजीशन, तो मैंने फ्रेश कैश तो डिप्लॉय आज भी नहीं किया. जो भी है, मे बी यू नो डे आफ्टर टुमारो और वेन एवर मैं कुछ करूंगा थोड़ा. लेकिन मेरे पास एक पोजीशन थी जहाँ पे मेरा कन्विक्शन लोअर था, तो आई सोल्ड दैट एट अ 30% लॉस टुडे, and I switched that to somewhere where in a similar in the same sector to something where I have far higher conviction. तो ये बिल्कुल करना चाहिए सभी ने. जहाँ पे आपका कन्विक्शन नहीं है, वो लॉस में है, कन्विक्शन या बोलते हैं ना स्टोरी चेंज हो गई है, या देयर इज यू यू स्टिल सी इश्यूज, तो वहाँ पे आपको निकलना चाहिए. गलती हो जाती है, 100% मुझसे भी हुई थी इस स्टॉक में एक पर्टिकुलर. बट बट आई एग्जिटेड टुडे इवन इन दिस डाउन मार्केट, बिकॉज जिसमें मैं एग्जिट कर रहा था वो 5% डाउन था, जो मुझे लेना था वो 10% डाउन था. तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा तो 5% का गेन हुआ. दैट इज द वे टू लुक एट इट. Right, sir. And just in case anybody is from the logistics sector, maybe employed or from business point of view in our attendees, definitely will also love to have opinion of that person so that we can get a fair understanding. Yeah, Yes. I'll be more than happy to hear somebody talk about logistics and stocks name तो नहीं चाहिए, but then areas in that वहाँ पे क्या हो रहा है कहाँ. तो I'll be more than happy to hear. Also, I want to add one thing. I see Santosh also here. Santosh is the guy who did the extension. I met him a few days back. Very, very, very good guy. And I must thank him in front of all of you for giving us such a fantastic tool. It has made, uh, analyzing much more easier. So thanks, Santosh. Sir, Santosh, all thanks to Vipin ji, he made me meet Santosh the day before I met you in Pune. So wonderful person, so enthusiastic, and I sincerely recommend each and everyone in our attendees to have a look at his work. The passion, the energy he carries, and that too with great simplicity is really. He will keep on adding value to everyone around. सो विपिन जी, मैं आपके पास आता हूँ जस्ट इन केस. एक सेकंड मेरे को जितेन सर ने बोला कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर कुछ कोई चीज आपको अगर लगती है. जितेन सर, आप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के ऊपर जो जो कंपनीज काम कर रही हैं उसको थोड़ा सा आप एक बार चेक कीजिए. जो इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काफी एक्टिवली काम कर रही है. उन्होंने एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया है जो रेलवे, रोड और पोर्ट नेटवर्क को इकट्ठे करेगा. तो उस सेक्टर में जो जो कंपनीज काम कर रही हैं आप उसको एक बार देखिए, या हम ऑफलाइन भी कभी कनेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में. वो अभी यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं है, तो आप उसको देख सकते हैं सर. Thanks. Definitely, we'll connect.
I'll take your number from Prince and we'll connect. Surely, Sure. sir. Sure. So, Ravikant, I mean, any good reports on the sector which you have read and any takeaways? A few of them you already spoke about, but so as to drive the session around logistics and all. I So, have read a couple of reports, I had shared one with you. It was by Niti Aayog, and it is like नीति की जनरली जो रिपोर्ट्स होती है बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, बिकॉज वो पॉलिसी लेवल पे काम करते हैं, उनको स्टॉक्स नहीं पिक करने होते हैं। तो 2018 की रिपोर्ट है। एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स तो मुझे याद नहीं, बट दैट्स अ रिलेटिवली स्मॉल रिपोर्ट, बिकॉज नीति की रिपोर्ट जनरली 150-300 पन्ने की आते हैं, ये शायद 40 वगैरह पन्ने की है। तो दैट इफ लाइक दैट कैन बी गूगल्ड अप एंड वन कैन रीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर स्टक। The most compelling point, like again, as per me, for this particular sector is that, like, see, any business needs to create value in order to gain valuation, apart from new age startups जिनका अलग ही economics का principle है। Here the game, in my opinion, is efficiency unlocking. Already our logistics is pretty inefficient in a way, 12-13%, 13%, 13%, of the GDP. And if you compare with economies of the same size वगैरह, the number comes to around 4.5%. So just imagine, even if this number melts down from 13 to 9 or maybe 7, the sheer amount of wealth which will be realized is phenomenal. So that is why, I like reading, and like report का जिस तो आई एम लाइक अभी याद नहीं मेरे को properly, because like quoting a report from my memory won't be right, but yeah, नीति का report है। Then there was a detailed article by one of the newspapers on recent decisions by government on the logistics sector. I think I had shared it with you, Prince. Did I share? yes, you did, and I'll have a look at it as and when I get time, and surely we can plan for a dedicated session, and also if more people will have their views around this sector. I mean, we will be really lucky, like if we get a hand on some expert, and more than expert, actually a person who is in the sector and who has been seeing how things have been evolving in past, maybe 4-5 years or even a decade. What are the changes, on the ground in reality, rather than theoretical policy papers? It will be a real eye opener for all of us, I think. Right. So, Jiten sir, even I was listening to an interview from Prashant Jain sir. So, he is also very positive about the power sector and the developments in the proxy space to power. And you had also talked about it in the past. So, I mean, barring valuation, do you think there are any other challenges in the space, or how you see in that sector, and what would be advisable on your part to look it from investment point of view? Ravikant, am I audible? Sorry. Sorry, I think I was on Okay. mute. Yeah, you are So audible. yeah, the way I see it, in the future, we might see, power deficit. And whatever I did attend a good session on this some time back, and saw some data, and it's that, coal is not going to go away. Coal, in fact, there will be, additional thermal plants which will have to be put up, despite all the focus on renewables and all that, because they also have their own set of issues. You know what happened in Germany and what is happening in other European countries. So for balanced power, coal, nuclear are important. Nuclear takes a lot of time. Coal can come a bit faster than nuclear. Our demand is going to grow for sure, and not enough supply is coming in. So uh, I see that sector to do very well. And you know, there are enough investable companies even now, the transmission companies, the transformer companies, and so on. Uh, you can look at, if not, the direct power producers. Uh,
Also, there was a call by one company yesterday. I mean, and uh, they have big plans because they see demand to be huge. And so this sector is something which I agree with Prashant that this is a sector which should be on watch. And if this correction gives some opportunities and all, we should invest in this sector from a long point in time, from you know long term view in mind. Right, sir. And sir, like there was one good if I remember correctly. So he was saying the start of the bull market starts with the improving financials of banks and NBFCs, and uh, the bear market starts when their financials start to deteriorate. So on those lines, if we talk about the credit cycle, so where are we placed in the cycle at this point in time? Because all the banks, barring, I mean, be it the public banks or the private banks, have done well, and so is the case with the uh, few of the NBFCs also. So how you see in line of the credit cycle and all? So I mean, uh, financials went through, banks went through a bad cycle, and then somehow in 2020 we could see some stabilization, and 2021 is when we could see that credit growth will happen, and that's where we got into financials. We were zero on financials and banks, but we immediately got into quite a few names then, and we are still holding it. I mean, the returns have been good, but I think the cycle will last for some more time. Uh, uh, I think at least 2 years we still have to play this cycle. Uh, and then, of course, we will assess, 1 year down the line, what is the situation and so on. And it can extend longer also. But at least, 1 to 2 years visibility we still have before the NPA cycle again starts and all that. I mean, NPA cycle will come in at certain point in time. The key will be to exit, much before that NPA cycle starts. You should not wait for the NPA cycle. I mean, there will be some signs which will be there. And for that, you have to look at, the bad banks, and they will start, you know, uh, uh, the NPA cycle before the good banks. So that will give you a clue, sort of, and till then, one should be invested. And we were talking about large caps also and all. If suppose somebody wants to invest in large caps, I think, banking is one sector where quite a few large cap banks are at very decent valuations, and growth is going to come for sure. So that is one sector which again looks good for some more time. Right, sir. And I remember our conversation, Jiten sir, and likewise when I talked to Ravi. So time and again, you guys believe in trimming down the least conviction ideas as and when things get frothy. So that is indeed a very important thing for all the participants to learn. So Ravi, anything more to add on, like how you go about selling when things are like overheated, so as to save the profit earned before things go crazy? So I will share what I do. So in like it's all about the business narrative, like how much conviction you have and what kind of narrative is that. Like if the narrative originally was of a turnaround, so we always have to remember, with a pinch of salt, that turnaround seldom happen. And if I'm at a reasonable profit in that position, I will exit from it. Because in my opinion, see, I'm very much handicapped with respect to technicals, so I'm not able to use those different strategies are there, v stop and everything. I follow more of a psychological tool which is called satisfaction. That is, it's not about the best possible result, but the possible result which satisfies you.
Okay, so that is what I follow, and yes, in ideas where my conviction level is lower, my allocation from the very beginning is relatively smaller to my overall portfolio size. For the ideas where I'm like highly convinced, I have held ideas for around 9 years, 8 years. Even now, I am holding couple of stocks which I've been holding for like 6, 7 years now. So in those ideas, there is this volatility thing is part and parcel of the game. So since I'm a man of limited skill set, so I tend to keep my strategy very simple. So this is how I go about things. And Jiten sir, as far as selling is concerned, so what are the things you struggle with even now, despite having 3 decades of experience? Hello. Yes, sir. I think I lost audio. Okay, am I I couldn't audible hear now? your question also. So my question is I, like, despite I, having I let me leave and come again. Sorry. Ravi, am I audible to you, right? Yeah, you are audible to me. Okay, sir will join. And Sachin sir had joined previously, but don't know he dropped again. So just in case he have something to have a conversation on, he's welcome. And even Vipin sir dropped again. So Jiten sir, question was simple. Like, despite having 3 decades of experience, what are the things you still struggle with on lines of selling your positions? So again, that is a constant improvement process you have. Uh, I've been guilty of selling too early in the past. I'm trying to better that, to be honest. See if I can, sell better. Uh, uh, it was, as I said, the most difficult part is holding, especially when you see big multi-bagger returns. So now I'm, trying to, basically evolve into, holding more patiently, understanding the power of tailwinds uh, and irrationality in the market. And if you can take benefit of that, you should, is what I think. And I'm also developing scenarios where I look at what is the worst case scenario for this. What is the what could be the worst case valuation this company can be given? What could be the worst case results for this? What could be the best case results for it? And so on. And accordingly, try to come up with exit valuations, exit prices, and so on. So I do have a system in place now, and I can say that I improved my selling, to be honest. But again, there is always scope to keep on improving. That's what an investor has to do, improve all the time, uh, and constantly learn. Another part is technicals, something which again I am zero on, so I rely on my fundamentals. But I do search social media, to be honest. Lot of times when you want to exit and you just search on social media and you know that there is just too many handles and too many people basically hot on that stock, you might just wait a bit more longer. And then I also try to employ reverse stop loss methodology over the last few years, where I will let it ride, have a 10% or 15% kind of reverse stop loss, and keep on moving it higher. And that has helped me with exit uh, at much higher returns than what I used to. All right, sir. So we got few more speakers. We start with Sachin ji. Sachin ji, any comments to make or maybe any good question from your end? Thank you, Prince ji.
आज का जो ये मार्केट में जो गिरावट आई है, एज रविकांत जी राइटली सेड, घबराना नहीं है. But one key question that always arises in my mind is that people come to the market, equity market, but they do not have any plan as such. What they want to do here. XYZ is investing in equity, and they also jump into it. That lots of money is being made over there, and with that vision they come here. And such surprises that come like today or like 1 or 2 days, it happened in the month of September, then they are suddenly taken off guard. So, first of all, before coming to the market or while entering the market, you have to understand your vision, your purpose, why you are here. What is your risk appetite? How much money you can invest Sachin on sir, a could you regular please basis check or with your lump? connection? I guess voice is breaking in between. Is it with me, Ravikant, or sir is audible to you properly? No. It is Am the I problem. audible? Yeah. सर की आवाज बार बार टूट रही है. सर एक Yes. बार ड्रॉप Okay, करके दोबारा ज्वाइन करिए okay, तो okay, okay. होपफुली I will दैट leave विल. and then come back again. Yeah. Okay. ओके सर. तो विनीत इज आल्सो विद अस. विनीत, क्या लग रहा है, सूर्यास्त हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो आजकल मार्केट? थैंक यू प्रिंस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. एक्चुअली मैं सो गया था, मैं तो अभी देखा कि ज्वाइन तो कर लिया था, बट उसके बाद लगा कि मैं सो जाता हूँ. 5:30 बजे अभी वाइफ ने उठाया तो अभी तक डिस्कशन चालू है. तो यार तो नींद नींद प्रॉपरली आ रही है, मींस यू आर वेल पोइज्ड. नहीं, वो तो जरूरी है ना, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता. बट हाँ, इट्स इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. इतना तो किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर को इतना तो बियर इन करना ही चाहिए कि पोर्टफोलियो 10-20% ऊपर नीचे तो हो ही सकता है कभी भी. दैट्स द नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट. तो आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ ए बिग डील. इनफैक्ट 30-40% ड्रॉ डाउन भी आ जाते हैं कई बार. 2017-18 में ऐसा ही हुआ था. तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग लाइफ. इफ एनीबडी इज इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, दे शुड बी रेडी विद इट. Right. And I also see Manish Dhawan in our attendee list. Please join as a speaker, as I was discussing with him yesterday. So I was asking a question to Manish that momentum guys, what are your feeling at current point in time? So his answer was like, we are always bullish, and as far as things go crazy, we cut down on our losses, or maybe the stop loss hit and we are out of the market. So for us, the market is more or less the same. So any furtherance on that would be welcome from Manish and Vineet and others also. Acha, Sachin ji, you joined back. You try speaking. Perhaps this time it would be better. And then Vineet also, like if you have anything to interact with Jiten sir, we can go with that. So Sachin ji, Yeah. please go ahead. Yeah. Am I audible? हाँ सर, हाँ. अभी आवाज आ रहा है तो आप बोल सकते हैं. अच्छा अच्छा. तो as an investor, we have to understand our risk profile, how much risk we are ready to take, and how much money we can allocate on a continuous basis or a lump sum basis, and that will our portfolio should be in tune with our risk profile. If we are not, we are averse to risk taking, then we have to allocate in those quarters where such on bad days less volatility is there. So this is my perception, and personally I prefer, since I am I am quite less risk averse, so I prefer to invest in almost 50% of my allocation is in large cap, and rest of the allocation is in a small cap. So far this method of allocation has kept my portfolio less volatile. So this is my understanding. About logistics sector, we had 2 years back, Prime Minister had launched this Gati Shakti Yojana. It is a huge yojana.
Am I audible? Yeah, sir, continue करें please. या सो गति शक्ति योजना में प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि उसको मतलब जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हैं उसको काफ़ी करीब करीब 25-30% रिड्यूस करने की प्लानिंग है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड इफ़ यू स्टडी द लॉजिस्टिक सेक्टर वेल इवन नेशनल हाईवेज विच आर बीइंग मेड इनलैंड वाटरवेज GST also indirectly comes in logistics sector, not directly, but indirectly it is helping in the sense that across the state borders, time which was being taken by in the transportation of goods, that has been done away with. So that is a way, but the key question arises that which of the companies or which of the subsectors of logistics sector will do well going forward. In an indirect way, I can understand that even highway companies are there in logistics sector. My personal perception is that as a developer, since I am into a real estate business and we do construct warehouses also, there is huge demand of warehouses in every state, every big cities and even district head. It is the demand is percolating down to district headquarters. So that is one sector of warehousing which has got a strong demand. Cold chain is huge in demand. कोल्ड चेन के अंदर भी काफ़ी डिमांड आ रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसमें काफ़ी सब्सिडी दे रही हैं. So in that part also, but directly or indirectly, which of the companies or which of the subsectors will get benefit? I am still to figure it out exactly. That's why I have kept myself up till now away from this sector. Yeah, that's all Fair from me. points. Fair Yes, points you made, sir, and I also see the pointers which you made in your conversation, and even Ravikant and I were discussing the same. So, Vineet, we had a discussion on logistics sector. So, do you have some fair understanding on the sector which you can share with your attendees so as to bring more points for discussion on this sector? हाँ, थोड़ा सा देखा हुआ है. आई हैव एन एक्सपोजर ऑल्सो इन द सेक्टर. मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एक दिन, उसमें लिखा था दैट द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ड्यूरिंग लॉजिस्टिक्स बाय ट्रेन फ्रेट कॉरिडोर. उसमें 2-3 या 3.5 रुपए पर किलोमीटर का फ्रेट लगता है. उसके बाद आता है हमारा शिप, विच इज 4.5 to 5 rupees पर किलोमीटर. एंड देन हमारा आता है रोड, विच इज अराउंड 7-6-7 rupees पर किलोमीटर. एंड देन आता है एयर, विच इज अराउंड 11-12 rupees पर किलोमीटर. तो इंडिया का जो ओवरऑल फ्रेट एक्सपेंस आता है, इट इज समवेयर बिटवीन 10 to 12 rupees पर किलोमीटर के हिसाब से. And government wants to reduce it to somewhere because developed economies are trading somewhere between 4 and 5, or between 3 and 5. तो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो 12 रुपए से कम हो के एटलीस्ट हम 6-7 पे तो पहुंचे, so that we are more efficient in transportation etc. And that's when Gati Shakti etc. was launched. जितने भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स बन रहे हैं, जितने भी पोर्ट्स के पास पास कंटेनर डिपोट्स बन रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस गति शक्ति स्कीम. जितना भी हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो भी इन सबका पार्ट है. जितना फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है वो भी इसका पार्ट है. स्पेसिफिकली जो अभी राउट भी लॉन्च हुआ है, पीछे काफी सोशल मीडिया पे वो आ रहा था, हमारा जो एयर टू रेल टू शिप टू आगे जाके यूरोप में जा रहा था. तो वो सब इट्स अ पार्ट ऑफ दैट मॉडल. eventually if government is able to reduce the logistic cost by even 2 rupees per kilometer in coming 5-6 years, it is going to give a huge boost to the economy. But in order to give that boost to the economy, a lot of infrastructure and extra things have to be built before that. And again, the return of that infrastructure being built will come much before that.
सो ऐसे कोई प्लेयर हम देख सकते हैं जो मल्टी मॉडल या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फ्रेट कॉरिडोर या फिर कंटेनर मैनेजमेंट या फिर कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों में जो एंसिलरी प्लेयर्स हैं, इन सब में हम आई कैन हैव द दिस पोजीशनिंग साइजिंग. But again, since I am biased, I already invested in this sector. It's very dear to me now because I am already up 40-50% in it. So I would not like to comment more positive on it because it becomes a biased opinion. But yes, government is putting a lot of efforts there. On sugar, I had a question to Jiten ji. I was reading somewhere कि CCI ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुगर प्लेयर्स को फाइन कर दिया बिकॉज दे वर रिगिंग द बिडिंग ऑफ इथेनॉल प्राइसिंग इन लास्ट बिडिंग प्रोसेस. एंड अभी रिसेंटली सभी ओएमसीज ने इथेनॉल की बिडिंग दोबारा से ओपन कर दी है. So, what kind of price regulation or any kind of regulation is expected from the government, and how would it impact the sugar producers? Because sugar का export import तो already regulated है, and most likely it will not be imported anymore, exported anymore because regulation तो वो आ ही चुकी है. But of the government channel वो सब फिर भी export हो ही रहा था, अब वो भी शायद कर्ब करने की कोशिश हो रही है. But in terms of ethanol, there is some regulation also expected या फिर ऐसे ही चलता रहेगा. जितेन सर आप म्यूट पे हैं. जितेन सर Jiten ji, are you there? I think we lost him. Yeah, I think. yes sir. Hello. Hello. Yes sir. हाँ जी, we can hear. I'm sorry, I couldn't get the मेरे यहाँ सब म्यूट था सब कुछ, मतलब I couldn't hear anything at all. So Vineet, can you So please Jiten, repeat the questions that हाँ, Jiten ji, I recently read that Competition Commission of India fined almost all the sugar producers for rigging the ethanol key price bidding to OMCs in last season. And this season, the OMCs have again started asking for tenders for ethanol. So, is there a regulation expected considering there is already a fine in place and etc.? तो कुछ रेगुलेशन एक्सपेक्टेड है फॉर इथेनॉल प्राइसिंग, कैसे होगी, क्या होगा? नहीं, आई थिंक प्राइस तो फिक्स्ड है. आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें सीसीआई का क्या है, बट वॉट एवर इट इज आई नो कि ये एनसीएलटी ने उसको रिवर्स कर दिया है पेनल्टी को. ओके, बट ये कार्टेलाइजेशन इज होते रहता है, कुछ पेनल्टियां लगती रहेगी, ये सब होता है. आई थिंक 2018 में भी कुछ हुआ था. आई डोंट नो, वो पेनल्टी आप सीमेंट में भी लगती रहती है. दैट इज ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस. और भी सेक्टर्स में लगती है ये बेसिकली. बट ये जो पर्टिकुलर है इसका तो आई थिंक रिवर्सल हो गया है, एनसीएलटी ने उनको रिलीफ दे दी है. बट बट आई डोंट थिंक इट्स अ बिग वरी राइट नाउ. ये पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इन इंडिया, टू बी ऑनेस्ट. इसके अलावा जीएसटी से कुछ ना कुछ डिमांड आती रहेगी, ये सब होता रहेगा. जो कंपनीज को वो फाइट करते हैं, वो चलता है, कुछ प्रोवाइड करते हैं. On most of the times, demands are basically thrown out, is what I have seen. हाँ, बट थोड़ी टाइम के लिए कुछ सेंटिमेंट के लिए थोड़ा फर्क पड़ सकता है. बट आई थिंक एथेनॉल ब्लेंडिंग इज अ रियलिटी. गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू डू इट. तो इसमें आई थिंक स्टोरी तो कुछ चेंज नहीं होती है मेरे हिसाब से. But Jiten ji, given the sugar shortage scenario, do you think ethanol की blending वगैरह जो है मीट हो पाएगी इस बार, और can sugar industry actually give that kind of ethanol to the OMCs? हाँ, तो वो आई थिंक कंपनीज ने कॉल में भी बोला है
अगर शुगर से उनको अच्छे रियलाइजेशन आएंगे तो दे विल नॉट डू टू मच कन्वर्जन. आई आई अटेंडेड सम कॉल्स और कंपनीज ने वो बोला है. अभी गवर्नमेंट को के पास एक ऑप्शन होगा कि प्राइस बढ़ा के दे या कुछ करे टू मेक इट मोर रेम्युनरेटिव फॉर देम. दैट इज आल्सो देयर. गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू गेट एथेनॉल फ्रॉम नॉन शुगर आल्सो. उसका भी आई थिंक गवर्नमेंट बोल रही है और कंपनीज भी बोल रही है कि वो लोग मल्टीपर्पज प्लांट्स बनाने का बोल रहे हैं. मतलब दे आर ऑल्सो रेट्रोफिटिंग देयर प्लांट्स फॉर इट टू बी मल्टीपर्पज के वो शुगर के अलावा दूसरे प्लांट रेसिड्यू से भी एथेनॉल बना सके. सो ये चेंजिंग सिनेरियो है, ये शॉर्टेज है. एक चीज समझना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज sugar prices will go up. So as of now, what I understand is that sugar से profit आएंगे ये साल ज्यादा than ethanol. हर जगह तो सर सरकार हाथ बांध देती है, शुगर का भाव बढ़ता है तो शुगर का प्राइस कंट्रोल कर देती है, इथेनॉल का भाव बढ़ता है. वो तो See, वो तो है ही. आई थिंक पिछली स्पेस में भी मैंने बोला था कि वो एक रिस्क है ही. उसको बहुत हाई जाने दे नहीं देंगे और स्पेशली अब इलेक्शंस वगैरह नजदीक है तो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने देंगे. दैट इज फॉर श्योर. जब गवर्नमेंट रेगुलेटेड ये होता है तो आपको अगर बुरे टाइम में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो आपके अच्छे टाइम में गवर्नमेंट आपसे लेती भी है. तो आई दैट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड बट आई थिंक स्टिल द स्टोरी इज इंटैक्ट. मैंने ये भी बोला है कि सिक्लिकलिटी कम हो गई है सेक्टर में. तो ये जो बड़े रिटर्न्स पहले बनते थे वैसे बनने वाले अभी नहीं है फॉर श्योर. बट सम रिटर्न्स डेफिनेटली पॉसिबल है इज व्हाट आई थिंक. ऑन अ लाइटर नोट जितन भाई, जो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं शुगर सेक्टर में वो बने रहे, मतलब. यस यस आई थिंक you should stay invested here. राइट राइट. थैंक यू. तो रविकांत, जी बोलिए प्रिंस. you also have some points to make और नो अभी नो मैं आई नरेश बियानी एम सर को गुड. देख रहा था, वो चले गए. उनसे थोड़ा चार्ट का भी हम आइडिया ले लेते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कहीं पे दिख रही है लॉजिस्टिक्स में. सो यार अभी तो एक दिन की गिरावट हुई है, पहले स्टेबल तो हो उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लेंगे. jokes apart. So Vineet, Ravi, Vipin ji, any questions or any points to make या फिर इसको हम wrap up करें आज के लिए. और मे बी वन लास्ट कॉल फॉर आवर अटेंडीज कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है जितिन सर से, विनीत से और रविकांत से, विपिन जी से, तो आप भेज सकते हैं. तो श्योरली विल ट्राई टू गेट योर. और आई ऑल्सो सी साहिल एंड अरविंद जी इन दी ऑडियंस. अगर जस्ट इन केस दे आर फ्री एंड वांट टू शेयर देयर थॉट्स, दे आर मोर देन वेलकम. एनीवन? Am I audible, guys? यस प्रिंस, यू आर ऑडिबल. ऑडिबल. मतलब कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है अभी अपने पास, है ना? I think we have covered up various perspectives which are needed for withstanding such volatilities and hiccups. So I think yes, काफी कुछ डिस्कस किया हमने ऑलरेडी अभी. अभी तो हम लोगों को ये कंज्यूम करना है कि आज की मार्केट का उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा. अभी तो वो क्वेश्चन पहुंचने की स्थिति में नहीं है शायद. नहीं, and especially everybody should celebrate tomorrow's festival with great devoting time to their family and with joy, and may Lord Rama bring prosperity to each and every one of us. बट यही है कि ब्रॉडली जो सबके डिस्कशन से निकल के है वो यही है कि आपका बिहेवियर प्राइम है, उसको आप कैसे कंडीशन करें. उसके बाद आप अपना रिस्क प्रोफाइल, अपना कैश फ्लो और जो भी एस्पेक्ट्स हैं आप उन पे काम करें और उसके बाद ही आप डिसीजन लें. और डेली मार्केट की मूवमेंट्स तो आपको डिस्टर्ब करेंगी, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा. तो
मेक योर डिसीजन पॉइंट्स लेस और कम एक्ट करेंगे, साउंड एक्ट करेंगे तो डेफिनेटली टाइम इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड और डेफिनेटली विल डू गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और आपको ये डिबेट हमेशा रहेगा डेटा का कि भाई ये काम कर रहा है वो काम कर रहा है, बट यू हैव योर माइंड, यूज इट टू योर एडवांटेज, बेसिस दैट डिसाइड कि आपको क्या सूट करता है। मार्केट में क्लैरिटी, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत जरूरी है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीजनेबल सेट करें। ऐसा नहीं है कि भाई आप कि बिल्कुल संत बन जाएं कि मुझे 10-12% मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आप कैपेबल हैं और आप उस तरीके की मेहनत कर सकते हैं तो श्योरली यू शुड डू। बट अगेन आपको अगर कुछ नहीं आता है या कुछ ऐसा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जिसमें आपकी कमांड नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करने में भी कोई बुराई नहीं है। और मार्केट में पैसा अभी बनेगा, आज ही बनाना है। इस थॉट प्रोसेस के साथ जो आते हैं तो डेफिनेटली उनको वो निराश होते हैं, क्योंकि मार्केट का नेचर या टेक्सचर ही ऐसा है कि भाई वो अच्छे अच्छों को हम्बल कर देती है। तो विल कीप कमिंग विद गुड सेट ऑफ स्पीकर्स एंड स्पेसेस। आज मुझे लग रहा था कि मार्केट में काफी हलचल है, तो वैसे तो मैंने अपना पोर्टफोलियो कुछ ऐसा ना टच किया है, कुछ उसमें ऐसा चेंजेस है, कुछ कैश डिप्लॉय करने को भी नहीं था, कुछ सोचते। बट अगेन कूल रहो और जैसा विनीत भाई ने अपना स्पेस ऑन करके नींद ली है ऐसी नींद लेते रहो सभी। पैसा जरूर बनेगा, आपका बनेगा या दूसरे का वो डिबेटेबल है। सो विद दिस नोट वी कैन रैप अप फॉर टुडे एंड definitely will come with more dedicated spaces and keep showering your love and time. Definitely we all do good together. Yeah, Vipin ji. Thank you, Prince Bhai, for such a short notice and for such a wonderful discussion. So I hope today is Durga Navami and tomorrow this Vijay Dashmi will be celebrated with the same joy which we are doing it in the past. Okay, so yeah, ups and downs, and hope that all the evils of the market shunt away. With that note, I thank you once again, you to conduct such a beautiful space, and more to come in a days to come. Yeah, All thanks to Jiten sir for being so kind and generous. He share his thoughts more often on our spaces, and definitely that help us all big time so as to get understanding on our behaviors and various sectors in the market. Thank you so much, sir, and other speakers as well. विनीत भाई, आप भी कुछ जाते जाते कुछ दो शब्द मेरी तारीफ में नहीं वैसे बोल सकते हो। Thank you everyone. Thank you Jiten ji for coming. Vipin ji, as always, it's a pleasure to hear your thoughts. Prince भाई, sorry मैं इस बार सोऊंगा नहीं, अगली बार जब भी ज्वाइन करूंगा अगली बार से I will always नहीं be यार, अच्छा देखो, हम किसी को अच्छी नींद प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो मतलब यार वी आर डूइंग गुड। बीच में आया था मेरे को भी बीच में प्रिंस भाई का मैसेज आया व्हाट्सएप पर, क्या बात है चुप चुप क्यों हो। मेरे को भी नींद आ रही थी बहुत तेज, मैं झपकियां ले रहा था, हिल रहा था मैं जैसे भूकंप आता है। तो एकदम से फिर मैंने चाय पी, फिर मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ। तो मेरा तो सर तो पता है, मेरा सोने का टाइम होता है वो, मैं 5:30 बजे उठता हूँ। ठीक है बट चलो हैप्पी बढ़िया। जितेन सर, आई वांट टू ऐड ऑन अ लाइटर नोट कि आज के स्पेस का एक फायदा हुआ, विदित भाई को हमने सुला दिया उनके तो सही है सर। नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं टॉप स्पेस पे बहुत कम आता हूँ आजकल। चलिए नहीं, एनीवे बट ठीक है गुड सर, टू बी हियर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ऑल द बेस्ट। हाँ and happy festivities to everyone. ओके, या बाय, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिषेक। This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. 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 Download your spaces today.
today. Download your spaces 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 today. Download your